जय जगन्नाथ जय श्रीराम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस ऑलरेडी हमें फास्ट सेशन करथिले एंड एटा तमर होची सेकंड सेशन एथिरे हमें आउ किछरा नुवा एमसीक्यू डिस्कशन करिया जहा पर कि तमर जो प्रिपरेशन अछि 2025 पई नियत रूप रे हेल्पफुल होबो। तो चलो समस्त जल्दी जल्दी जॉइन हुओ। जय जगन्नाथ पूर्वा ज्योत्सना रानी अंकिता देन हमें विद इन 1 मिनिट चैप्टर को स्टार्ट करिवा एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जोटा कि हमें डिस्कशन करवा क्वेश्चन माध्यम रे प्रीवियस क्लास रे जहाँ भी जहाँ क्वेश्चन डिस्कशन करते ताकू अगेन रिकॉल करवा जम्मा भी भूलिया को दबानी। तो डोंट वरी टोटल केते वाचिंग देन हमें स्टार्ट कर दबा। ओके तो जल्दी जल्दी जॉइन हुओ 17 वाचिंग। तो आउ हमर रेस्ट पिला टिके जॉइन हो तो देन हम इमीडिएटली स्टार्ट कर दवा। समस्त बाकी भलो अच्छो एंड खाई पी ठीक ठाक अच्छो। पूर्वा ज्योत्सना रानी अंकिता सुदीप्ता गुड इवनिंग। यस सुदीप्ता गुड इवनिंग। अनुराग गुड इवनिंग सर। यस अनुराग। तो ताहले स्टार्ट करिवा। तो चलो and the first question तब पाखरे the process of exchange of oxygen from the atmosphere with the carbon dioxide produced by the cell। एते इजी क्वेश्चन पर आराम से क्वेश्चन बीट बाय बीट सब सॉल्व करो। कार्तिक जय जगन्नाथ जयदेव यस गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलो तो स्टार्ट करो 24 वाचिंग एंड चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम पाखरे अछि the process of exchange of oxygen from the atmosphere with the carbon dioxide produced by the cell is called as कौन को जाय को सरस्वती बी यस हमें जानि छे दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। परफेक्ट ब्रीदिंग राइट आंसर इज ब्रीदिंग एंड मन रखो ब्रीदिंग इज अदरवाइज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द हार्मफुल गैस produced by the catabolic reaction in our body। आम बॉडी रो कैटाबोलिक रिएक्शन द्वारा कौन से हार्मफुल गैस टा बेसिकली प्रोडक्शन हुए कौन आंसर। यस आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। परफेक्ट आमे जानि छे बेसिकली जो ब्रीदिंग प्रोसेस रहिला तो ब्रीदिंग प्रोसेस रे हमें कौन करे सपोज दिस इज द लंग्स तो एटमॉस्फेयर एयर सपोज ऑक्सीजन हैला तो ऑक्सीजन टा बेसिकली कौन हुए ना बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन इट विल मिक्स विथ द ब्लड देन ब्लड टाको ट्रांसफर करके डिफरेंट सेल पाखरे पहुंचे एंड एवरी सेल गोटा कैटाबोलिक रिएक्शन हुए जो रिएक्शन रे ग्लूकोज रो ब्रेकडाउन हुए C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स राइज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड ATP। सो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। परफेक्ट। एटी मते गोटे कथा को ओजोन लेयर रो थिकनेस को मेजरमेंट करिया पई को यूनिट ओजोन लेयर रो thickness को measurement करया पई which unit is used who can say to measure the thickness of ozone layer which instrument को sorry which unit is used। yes perfect that is Dobson unit। perfect ozone layer रो thickness को measurement करया पई unit is Dobson unit। perfect। चलो oxygen O2 is utilized by the organism dash break down nutrient molecules like glucose and derivative energy for performing various activity। yes Dobson unit सुदीप्ता लिपिका कार्तिक ज्योत्सना रानी पढ़े आज समस्त यार आंसर दियो 3 नंबर क्वेश्चन। yes कौन हबो oxygen is utilized by the organism to indirectly break down nutrient molecules like glucose and derive the energy performing the various function। आंसर होची 3 नंबर बी। yes perfect you have to remember that is oxygen is utilized by the organism to indirectly break down the nutrient molecules like glucose and derive energy that is कौन ना ATP। अच्छा मते को कि मैक्सिमम ATP प्रोडक्शन सेल रे कोड हुए मैक्सिमम ATP प्रोडक्शन इन ए सेल कोड हुए ऑप्शन दोजी मैक्सिमम ATP प्रोडक्शन कोड हुए ऑप्शन 1 साइटोप्लाज्म
ऑप्शन बी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ना ऑप्शन सी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया inner membrane of mitochondria in which cell organelle there is maximum ATP will produced is mitochondria but mitochondria कोटा inner membrane of mitochondria na matrix of mitochondria answer is matrix answer is that is inner membrane of mitochondria because strictly मन रखिबो inner membrane of mitochondria जोठी की बेसिकली हमर कोन हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुए सो मैक्सिमम एटीपी गोटे सेल भितर प्रोडक्शन ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लेट इट नेक्स्ट चलो मेकानिज्म ऑफ ब्रीदिंग vary among different group of animals depending mainly on their dash and dash different जो ऑर्गेनिज्म माने रहिले तो सेमानकर बेसिकली ब्रीदिंग रो जो मेकानिज्म टा vary करे को जिंस को नेकी vary करे सेमानकर हैबिटेट को नेकी को माने एक्वाटिक को माने टेरेस्ट्रियल को माने बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल ना सेमानकर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना बोथ ए एंड बी कौन आंसर कार्तिक स्मृति रेखा बोथ आर पृष्टि बोथ ए एंड बी परफेक्ट सी इज करेक्ट चलो बढ़िया क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग gaseous exchange between oxygen and carbon dioxide occurs through the entire body surface in which of the following gaseous exchange between oxygen and carbon dioxide occurs through the entire body surface total ऊपर body surface द्वारा कहार gaseous exchange हुए suppose this is an organism तो को organism रो total completely body surface रे gaseous exchange हुए sponge ना flatworm ना ciliated ना all of these कौन होबो याकू नै कि मोस्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा डोंट वरी खाली पेशेंस रे सुनो एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी सो को बही जदी तमे फॉलो अप करिया को चाहूथबो बा को बही को प्रॉपर्ली पढिया चाहछो देन आंसर इज यू हैव टू फॉलो ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी तो आंसर कोन होबो स्पॉन्ज एनसीईआरटी टोटे लाइन लिखाई छी लोअर इन्वर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्ज सिलेंटेरेटा एंड प्लाटीहेल्मिंथेस जो माने कि बॉडी रो सरफेस द्वारा बा टोटल कंप्लीटली बॉडी रो सरफेस रे ही गैसेस एक्सचेंज करंती तो आंसर होची ऑल ऑफ दिस क्लियरली मन रखियो डायरेक्टली इनसाइड लिखा अछि लोअर इन्वर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्ज सिलेंटेरेटा फ्लैटोर बेसिकली तांकर बॉडी सरफेस द्वारा गैसेस एक्सचेंज करंती क्लियर अच्छा मते को कि बेसिकली ए तीनटा ऑप्शन भितरु स्पॉन्ज फ्लैटोर एंड सिलेंटेरेटा तीनटा ऑप्शन भितर मते को कि कहार वाटर कैनाल सिस्टम देखा जाए वाटर कैनाल सिस्टम व्हिच फाइलम विल शो वाटर कैनाल सिस्टम हु कैन से वाटर कैनाल सिस्टम कहार देखा जिवो एनिमल किंगडम रो क्वेश्चन देखो आमे सब बेले पई ट्राई करिया कोन कोन क्वेश्चन को लेके कोन कोन माइंड टा एक्सरसाइज हे परिबो एंड मोस्ट इंपोर्टेंट होची तोर माइंड एक्सरसाइज आंसर इज अनुराग नाही वाटर कैनाल सिस्टम देखा जाए पोरीफेरा रो एंड पोरीफेरा फाइलम रो दैट इज स्पॉन्ज तो आंसर होची स्पॉन्ज पोरीफेरा फाइनल हैला काहे कि ना जदि तुम सपोज पोरीफेरा बॉडी देखिबो सपोज दिस इज ए पोरीफेरा रो बॉडी भीतर बहुत सारा एंती छोट छोट पोर थाए एंड ए पोर मानन को बेसिकली कहा जाए ओस्टिया तो बेसिकली ए पोर बा ओस्टिया दे कि पानीटा एंट्री करे एंड बॉडी भीतर गोटे लार्ज कैविटी थाए दैट इज कॉल्ड एज स्पोंजोसेल एंड ओस्कुलम दे कि वाटरटा एग्जिस्ट हुए तो स्ट्रिक्टली मन रखिबो पोरीफेरा दे कि पानीटा एंट्री कला स्पोंजोसेल एंड ओस्कुलम दे कि वाटरटा एग्जिस्ट कला तो गोटे वाटर कैनाल वाला सिस्टम अछि एंड आंसर होची स्पॉन्ज मते को कि फ्लैटवर्म बा प्लैटीहेल्मिंथेस रो एक्सक्रीटरी ऑर्गन किए प्लैटीहेल्मिंथेस रो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑप्शन दोची फ्लेम सेल नेफ्रिडिया ना दैट इज हमें जदि कहिबा प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन किए फ्लैटवर्म रो एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज फ्लेम सेल परफेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच रेस्पियर थ्रू देयर बॉडी सरफेस द्वारा केतेटा स्पीशीज जनरली बॉडी सरफेस द्वारा हमें जानि छे बॉडी सरफेस द्वारा को माने पोरीफेरा ये तो मन थिबो तो पोरीफेरा सिलेंटेरेटा
and platyhelminthes. तो बेसिकली एई तीनटा फाइलम रो जेतिकी सब एनिमल्स माने रहिले सेमानकर गैसियस एक्सेस बॉडी सरफेस द्वारा हुए तो तुमको मेनली ए जो एग्जांपल देछि आ भितर तुम देखिया पड़ियो को माने होचंदी पोरिफेरा को माने सिलेंडरेटा एंड को माने प्लैटिहेल्मिंथेस सुदीप्ता गीतांजलि बी साइकन साइकन गोटे कहार एग्जांपल पोरिफेरार एग्जांपल एंड हम जानि जे पोरिफेराटा तार बॉडी रो सरफेस द्वारा गैसियस एक्सेस करिवो सो पोरिफेरा स्पॉन्जिला दिस इज एन एग्जांपल आल्सो पोरिफेरा so here Cycon spongilla. Then Adamsia. Adamsia also this is an example of Coelenterata. So Coelenterata habo. Tenia tapum fasciola liver plug. This is an example of platyhelminthes. Habo. Lassifor lac insect. This is an example of Arthropoda. Arthropoda haboni. Pilla apple snail. That is an example of mollusca. Haboni. Antidium sea lily. Cucumaria sea cucumber Ophiura brittle star. This is an example of Echinodermata. Haboni. Gorgonia. That is our sea fan. This is an example of Coelenterata. Habo. Jellyfish. ये भी हबो ताले कौन हबो आंसर 1 2 3 4 5 6 so answer I think C हबो I hope कि 6 that is C हबो आंसर 6 नंबर yes that is answer होची C कहीं ना 6 टा हला ना देख पाइलो ना कोटा कोटा हला एग्जांपल टिके मन थिबा दरकार ए क्वेश्चन पई एग्जांपल मन रखा दरकार साइकन हला गोटे स्पॉन्जिला हला एडामेसिया हला टेनिया हला प्लाटिहेल्मिंथेस रो एग्जांपल गॉर्गोनिया हला जेलीफिश हला तो टोटल होची 1 2 3 4 5 6 सो आंसर कोन हबो सी क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किन सर्व्स एज एन एक्सेसरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन याक भितरु कहार रेस्पिरेटरी ऑर्गन होची स्किन कोन हबो शशिरेखा सुदीप्ता आर पृष्टि फ्रॉग अंकिता कार्तिक गीतांजलि अनुराग वॉइस ऑफ कृष्णा कौन आंसर दैट इज फ्रॉग परफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलो मैच द फॉलोइंग यू हैव टू मैच द फॉलोइंग ऑथोम ऑथोम बा जो हमर जिया रहला ऑथोम रो मॉइस्ट क्यूटिकल देन इंसेक्ट मानकर कौन थाए दैट इज नेटवर्क ऑफ ट्यूब बा ट्रैकियल ट्यूब थाए तो इंसेक्ट नेटवर्क ऑफ ट्यूब और ट्रैकियल ट्यूब बर्ड्स एंड मैमल्स मानकर बेसिकली कौन थाए लंग्स थाए एंड फिशेस मानकर गिल्स तो दैट इज A4 where is option A4 A4 and aquatic arthropoda mollusca D that is हमरो D हला 1 तो here is option D1 A4 D1 that is B B and E aquatic arthropoda mollusca and fishes that is gills so C2 C2 and D1 okay here is the answer B perfect perfect next question amphibia example frogs respire through which of the following option is important for the respiratory organ for the frogs only for the frog pai kota important yes as you know that frog can respire through the moist skin yes obviously right and buccopharyngeal cavity and also frog can use their lungs as the respiratory organ so answer is kon of answer yes answer is all of these perfect answer is all of these because amphibia frogs respire through the lungs द्वारा ही परिबो as well as moist skin and also buccopharyngeal cavity so answer is D in adult frog does not respire through adult frog ता काहा द्वारा respiration करि परिबो नाही this is an amazing question and the adult frogs does not respire देखो हमें जानि छे frog ता होचे कोन vertebrate एंड जेतिक सब वर्टिब्रेट रहिले समस्तिंकर एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो देखिबा बा समस्तिंकर जदी एम्ब्रियो स्टेज देखिबा समस्तिंकर गिल्स थाए बट लैटर स्टेज रे आम मानकर भी एम्ब्रियोनिक स्टेज रे गिल्स स्टेज थाए बट लैटर स्टेज रे गिल्स स्टेज ता एब्सेंट थाए सो निहात रूप रे हम एई कांसेप्ट पकई परिबा एडल्ट फ्रॉग ता एडल्ट फ्रॉग डज नॉट रेस्पायर थ्रू दी गिल्स तले आंसर कोन हबो दैट इज गिल्स
परफेक्ट पूर्वा चस्मिनी गीतांजलि सौम्याश्री बुझी होची तो प्रतीक्षा आमे जहाँ भी क्वेश्चन करछे ताकू नेकरी कोन कोन नुआ नुआ जिंस बस माइनरली सुनो एंड पूरा प्रॉपर्ली सुनो खाता रे टिके 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 नोट डाउन करूथाओ देन एवरीथिंग विल बी ओके आई थिंक बुझा पड़थियो सोनालिसा होंतु शुभस्मिता प्रज्ञा गीतांजलि बुझिस तो बाकी जोठी जो ऑप्शन को नेकरी आमे जदी को क्वेश्चन को लिंक करि पारुचे देन बहुत बढ़िया कथा এই क्वेश्चन नहीं कौन कौन এই ऑप्शन को नहीं कौन कौन क्वेश्चन सही परियो बा एग्जामिनर को लेवल पॉइंट क्वेश्चन जाई परियो तो ए सब विषय रे भी निहत रूपे आइडिया थवा दरकार ओके चलो यस सोमेश्री थैंक यू चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा मन रखिबो एडल्ट फ्रॉग डज नॉट रेस्पायर थ्रू द गिल्स बिकॉज सबोल में गोटे पॉइंट अछि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस सेतळे हमें इवोल्यूशन पढेबा सेतବେଳେ इवोल्यूशन होईची बोली कोन कोन एविडेंस अछि जेमति कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो थरे कि जो रॉक मानकर लेयर को देखि कि देखा जिवो कि एई रॉक रो लेयर ता एतिकी वर्ष पुराना सो निहात ऊपर एई रॉक रो लेयर रे एई स्पेसिस ता मिलुची ता माने कि ए स्पेसिस भी एतिकी वर्ष रो पुराना हेइथिबो काहे ना लेयर एतिकी लेयर फॉर्मेशन पे एति वर्ष लागे सेमति गोटे एविडेंस अछि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस प्रत्येक वर्टिब्रेट रो एम्ब्रियोलॉजी माने बा एम्ब्रियोलॉजिकल जदि हम देखिबा समझ गिल्स स्लिट्स थाए बट लैटर स्टेज रे गिल्स न थाए तो सही बेला एडल्ट फ्रॉग रो गिल्स ता एब्सेंट चलो परफेक्ट नेक्स्ट which is the correct sequence of the air passage in man बा जदि हम जेतले when we are taking the air through our nose so what is the correct passage by which the air will enter to the lungs and this is the easiest question good evening Ritesh which is the correct sequence of the air passage as you know that first one is nasal cavity and then pharynx then larynx then trachea then bronchi bronchioles and alveoli and here the answer is B perfect if someone will ask you among pharynx and trachea and larynx again I am saying the question among pharynx trachea and larynx which one is made up of completely cartilage among pharynx trachea and larynx which one is made up of completely cartilage द्वारा किए तैयारी which one is made up of completely cartilage pharynx trachea larynx completely cartilage completely that is larynx you have to remember larynx suppose this is the structure of purvasa right purva and suppose this is the trachea and this is the food pipe and there is a structure that is called as larynx or voice box larynx is otherwise called as voice box and you have to remember larynx or voice box is completely made up of cartilage or we can say that it is a cartilaginous box which produce the sound and it is made up of completely cartilage but same thing if जदि हमें ट्राकिया कथा देखिबा तो ट्राकिया भी लाइन हेची बाय द इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग ट्राकिया रे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस so you have to remember incomplete cartilaginous ring NEET रो previous year question statement wise question जतला NEET रे पचारतिला तो which of the following statement correct रे देई दितला कि trachea is lined by complete cartilaginous ring but it is strictly mentioned in NCERT cartilage is lined by incomplete cartilaginous ring so answer is larynx is made up of completely cartilage clear and it is otherwise called as voice box okay next okay chalo in mammals the voice is produced by bronchus larynx inhalation and exhalation answer is larynx next trachea divided into right and left primary bronchi at the dash thoracic vertebra this is also previous year question so 14 number question answer दियो trachea divided into right and left primary bronchi at the dash thoracic vertebra कौन आंसर yes right yes fifth thoracic vertebra perfect 1 second please fifth thoracic vertebra
गोटे सेकंड प्लीज. Okay, that is answer will be fifth thoracic vertebra. Perfect. Clearly मन रखियो. Next, opening of larynx into the pharynx is guarded by. Opening of larynx into pharynx is guarded by tracheal valve. All of these syrinx na epiglottis. Answer is epiglottis. Next, glottis is a passage for food, both food and air. None of these. Glottis is a passage for. 16 number question answer दियो लिपिका. 16. Glottis. As you know that suppose this is the face and this is the wind pipe and suppose this is the food pipe. The wind pipe रो opening को कहा जाए glottis and food pipe रो opening को कहा जाए gullet. And here the question is about glottis. So answer will be air. Perfect. B. Yes, right. Next. Glottis is an opening in the floor of. Where is the glottis is present? Glottis is an opening in the floor of. Where is the glottis is located? Mouth, trachea, pharynx, diaphragm. Answer will be glottis is the opening in the floor of. That is, yes, pharynx. You have to remember floor of pharynx. Glottis is the opening in the floor of. Who floor represent achi? In the floor of pharynx, located in the opening of trachea, but it is present in the floor of pharynx. You have to remember the lining. The lungs are protected with the help of ribs, sternum, vertebral column, all of these. Lungs are protected with the help of ribs, sternum, vertebral column, all of these. Yes, and the right answer is all of these. Perfect. Who can say how many bones are there in the ribs? Who can say how many bones are there in the ribs? That is 12 pairs ribs or 24. Then how many bones are in the sternum? Sternum is a single bone, one. How many bones are there in vertebral column? There is 26 bones. Okay. Chalo, next question. Which one has the smallest diameter? Right bronchus, secondary bronchial, left bronchus, respiratory bronchioles. Smallest diameter kahar? Easiest question. Smallest diameter kahar? बढ़िया अच्छी राजा महाराणा सोनालिसा. Yes. लिपिका आर पृष्टि. Answer is respiratory bronchioles. Yes, perfect. Answer is respiratory bronchioles. बुझे तो अरे हमें जानी चाहिए ना बेसिकली ट्रैकेटा डिवाइड होची लंग्स को प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियल्स. तो जिते तळू तळू जे ब्रोंकियल्स हम तो पाइपटा पूरा छोट पाइपटे ना तो ऑब्वियसली डायमीटर ही छोट हम. इजी जिंस प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियल्स. तो टर्मिनल ब्रोंकियल्स माने पूरा डायमीटरटा स्मॉल डायमीटर. बुझला? यस. अलिसा. ओके. Next question, and this is the most important question. Lining of trachea is made up of simple squamous epithelium, simple cuboidal epithelium, na that is stratified cuboidal epithelium, na pseudo stratified epithelium. बढ़िया question. 20 number को भलो question. Answer दियो. Pseudo stratified epithelium, simple squamous epithelium. Yes, answer is pseudo stratified epithelium. And it a previous year AIMS question you have to remember, and also NEET रो भी question. तो निहात रूप रे important question. Lining of trachea is made up of by trachea रा lining जदि देखिबा epithelial tissue, but को epithelial tissue
This is pseudo stratified epithelial tissue. You have to remember, this is a most important question. Next, each terminal bronchioles gives rise to a number of very thin, irregular walled and vascular bag-like structure called as alveoli. Yes. Next, epiglottis is made up of elastic cartilage. A question उड़ा में करिचे ताकू टिके आगु आगु नबा. Yes, the answer is elastic cartilage. चलो next जीवा. Okay, a question टा को 31 number. When air being absent, the human trachea does not collapse due to presence of bony rings, chitinous rings, turgid pressure ना cartilaginous ring. कौन हबो? Answer is 31. 31 आंसर दियो. आंसर कौन हबो? That is cartilaginous ring. Perfect. चलो एक क्वेश्चन हम प्रीवियसली करिचे. Obviously there is diaphragm, external intercostal muscle contract करिचे. आगु जीवा. बस एउठ आसो. Oxygen dissociation curve. बस oxygen dissociation curve is को एउठ आंसर दियो. Oxygen dissociation curve जोटा कि जो कर्व टा बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक्स एक्सिस रे एंड वाई एक्सिस रे हीमोग्लोबिन सैचुरेशन. तो ये जो कर्व टा को कर्व सिग्मॉइड कर्व ना हाइपरबोला ना स्ट्रेट लाइन ना पैराबोला ना कोन. आंसर कोन हबो? यस लिपिका, दैट इज sigmoid curve. You have to remember sigmoid curve. Binding of oxygen with the hemoglobin. देखो बढ़िया कथा एटी. Binding of oxygen with hemoglobin can be affected by partial pressure of carbon dioxide, H plus concentration, temperature ना all of these. श्रद्धा स्निग्धा देखो बढ़िया कथा मन रखिबो. गोटे कथा, सपोज दिस इज द alveoli and this is the blood vessel. मोस्ट पाखरे मन रखो गोटे कथा, आमे जानिचे blood रे RBC is there and RBC रे hemoglobin is there and this is the alveoli. तो जेतो बळे बेसिकली ऑक्सीजन टा हीमोग्लोबिन से बाइंड करिवो एट द साइट ऑफ alveoli. एट alveoli साइट रे जेतो बळे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंडिंग करिवो तो सेतो बळे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टा मस्ट बी हाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड must be low, H plus low, temperature low. You have to remember the question पचारिला binding of oxygen with hemoglobin. Where is the hemoglobin will bind with the oxygen? At the alveoli site ना at the tissue site? Answer is at the alveoli site. Then binding बेले that is कौन कौन affected करे? Partial pressure of carbon dioxide गोटे matter, yes. H plus भी गोटे matter, yes. And temperature भी गोटे matter, yes. So all of the these. Answer is D. Perfect. Then same कथा मन रखिबो जेते बेले टिश्यू साइट रे, सपोज दिस इज द टिश्यू एंड टिश्यू साइट रे जेते बेले हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वर्तमान बाइंड करछि, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2. वर्तमान पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन टा डिसोसिएट हबो. तो डिसोसिएट हला बेले ऑपोजिट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, H plus is high, temperature is high. You have to remember ए जिनस गोटे पॉइंट मन रखिबो. alveoli साइट रे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंडिंग बेले कोन कोन फैक्टर एंड टिश्यू साइट रे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिसोसिएट कला बेले कोन कोन फैक्टर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मली कैरीड बाय द 100 मिलीलीटर ऑफ प्योर ब्लड. 100 मिलीलीटर प्योर ब्लड केते अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मली कैरीड करे? 10 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर, 4 मिलीलीटर. आंसर कोन हबो? सोनालिसा 20 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर को. yes perfect. The amount of oxygen normally carried by the 100 ml of pure blood, amount of oxygen kete? That is 5 milliliter. Yes, answer is 5 milliliter. How much oxygen is delivered to tissue by 100 milliliter oxygen under normal physiological condition? How much oxygen is delivered to tissue by the 85 क्वेश्चन जदि हम देखा तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मली कैरिड केते अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मली कैरिड करछि? दैट इज नॉर्मल फिजियोलॉजी बेले प्योर ब्लड 20 मिलीलीटर. बट हाउ मच ऑक्सीजन इज delivered to tissue by ऑक्सीजन बट नॉर्मल फिजियोलॉजी कंडीशन बेले टिश्यू को केते दउछि? दैट इज 5 मिलीलीटर.
Yes. How much carbon dioxide is delivered to the alveoli by the 100 milliliter of deoxygenated blood under the normal physiological condition? Strictly मन रखिबो normal physiological condition बेले केते मिलीलीटर केते मिलीलीटर ऑक्सीजन सप्लाई हबो दैट इज टिश्यू को 5 मिलीलीटर एंड नॉर्मल फिजियोलॉजी कंडीशन बेले केते मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड alveoli को सप्लाई हबो दैट इज 4 मिलीलीटर. यू हैव टू रिमेंबर केते मिलीलीटर ऑक्सीजन टिश्यू को सप्लाई हबो 5 मिलीलीटर. केते मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड alveoli को सप्लाई हबो दैट इज 4 मिलीलीटर. तो दीटा लाइन मन रखिबो एवरी 100 मिलीलीटर ब्लड रे that is 5 milliliter टिश्यू को सप्लाई हबो ऑक्सीजन एंड एवरी 100 मिलीलीटर ब्लड रे 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड alveoli को सप्लाई हबो. ओके नेक्स्ट ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ hemoglobin is directly proportional to carbon dioxide, directly proportional to carbon monoxide, inversely proportional to carbon dioxide ना इंडिपेंडेंट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड. ऑक्सीजन बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन को देखो को लोकेशन रे बेसिकली हीमोग्लोबिन टा ऑक्सीजन को बाइंडिंग करिवो. सपोज दिस इज द alveoli एंड दिस इज द ब्लड वेसल. तो बेसिकली एट द alveoli साइट रे ही बेसिकली कोन होबो ना हीमोग्लोबिन सह ऑक्सीजन टा बाइंड करिवो. एंड हमें जानिचे बाइंडिंग बेले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, H प्लस इज लो, टेम्परेचर इज लो. तो निहात रूप में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मन रखियो दैट इज आंसर कोन होबो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन मोनोक्साइड ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड. हैला तो जेतेबेले हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रो बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़िबो जेतेबेले alveoli साइट रे कार्बन डाइऑक्साइड रो कंसंट्रेशन लो थिबो. सेम हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन रो डिसोसिएशन होबो टिश्यू साइट रे जेतेबेले कार्बन डाइऑक्साइड रो कंसंट्रेशन हाई थिबो. तो नियत रूप रे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. चलो तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ हीमोग्लोबिन रो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कोन? तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ हीमोग्लोबिन कोन आंसर? मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ हीमोग्लोबिन इट इज रेड कलर ना प्रेजेंस ऑफ आयरन कोटा होचे मोस्ट एप्रोप्रिएट? सॉरी कोटा मोस्ट एप्रोप्रिएट हबो? रेड कलर तो नुह रेड कलर बट मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंस ऑफ आयरन ना इट्स एबिलिटी टू कंबाइन द रिवर्सिबल विथ ऑक्सीजन. ऑब्वियसली दिस इज द आंसर काहे कि हम जानिछे alveoli साइट रे बेसिकली हीमोग्लोबिन टा ऑक्सीजन को बाइंडिंग करि पारे बा हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन HbO2 होई पारे. सेम दैट इज रिवर्सिबल होबो केतेबेले दैट इज टिश्यू साइट रे हीमोग्लोबिन टा ब्रेक डाउन करके हीमोग्लोबिन रे ऑक्सीजन बा हीमोग्लोबिन को छाड़ी पारे. तो नियत रूप रे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंडिंग करा दरकार एंड आल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन भी होबा दरकार. सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ alveoli सॉरी हीमोग्लोबिन. बुझी होछ तो राजा महाराणा प्रज्ञा शुभस्मिता associate and dissociate बस the two properties are present in hemoglobin that is association property and also dissociation property. But hemoglobin can associate with oxygen at the alveoli side and also it will dissociate from the it will dissociate at the tissue side. So due to the associate and dissociate the reversible property अछि so that it is the most characteristics. Factors at tissue level favors dissociation of oxygen. टिश्यू साइट रे देखो यही क्वेश्चन हम एबे कले मोस्ट इंपोर्टेंट टिश्यू साइट रे फैक्टर्स एट द टिश्यू लेवल फेवर्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन. टिश्यू साइट रे को फैक्टर टा फेवर करे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से डिसोसिएट होबा पे को कोन आंसर? लो PO2 लो PSO2 हाई H प्लस टेंपरेचर. इजी क्वेश्चन आराम से आंसर दियो. वॉइस ऑफ कृष्णा जस्मिन अंकिता अनुराग देखो कौन कहली एबे ही तुम कहितली टिश्यू साइट रे डिसोसिएट हबो alveoli साइट रे कोन हबो एसोसिएट हबो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रो एसोसिएट हबो alveoli साइट रे सेतबेले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो H प्लस इज लो टेंपरेचर इज लो एंड एट द टिश्यू साइट जेतबेले हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रो डिसोसिएट हबो तो से टाइम रे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो
partial pressure of carbon dioxide is high, H plus is high, temperature is high. তাহলে কোন হবে आंसर? That is high PCO2, sorry, low PO2, high PCO2, high H plus, high temperature. So answer will be C. Clear? Yes. What of answer? That is low PO2, high PCO2, high H plus and high temperature. Yes, obviously. मन रहिबो आंसर. And कौन region कौन पाई H plus high होबो जदि हम देखिबा टिके. Suppose this is the tissue side. Suppose this is the tissue and this is the blood. देखो आम जानी कौन ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, H प्लस इज हाई, टेम्परेचर इज हाई. आम गोटे कथा जानीचे टिश्यू साइड रे जदि 100% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज है तो से 100% रु 20 रु 25% हिमोग्लोबिन सब बाइंड करिवो, 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म रे जीवो बा आरबीसी रो जो वाटर अछि वाटर रे कार्बन डाइऑक्साइड 70% बाइंड करिवो, दैट इज फॉर्मेशन करिवो H2CO3. immediately carbonic acid by the enzyme of carbonic anhydrase breakdown करिवो HCO3 minus और H plus. तो नियत रूपे H plus increase हला. क्लियर? एंड आम जानी टिश्यू साइड रे एवरी टिश्यू रे गोटे रिएक्शन हुए C6H12O6 बा कैटाबोलिक रिएक्शन हुए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एटीपी रिलीज हुए. एटीपी प्रोडक्शन होची बा एनर्जी प्रोडक्शन होची माने टेम्परेचर हाई. यस, टेम्परेचर हाई. एंड अकॉर्डिंग टू द दैट इज बोर्स इफेक्ट. बोर्स इफेक्ट कोन हुए ना हिमोग्लोबिन ऑक्सीजन रो डिसोसिएट टिश्यू साइड रे हुए ड्यू टू द H प्लस रो कंसंट्रेशन एंड आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. आको बोर्स इफेक्ट कहा जाय. तो दैट इज आंसर विल बी सी. नेक्स्ट चलो 91 कार्बन 91 कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट फ्रॉम द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन व्हेन. तो सेम कथा कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन सो एसोसिएट हुए कोठी टिश्यू साइड रे एंड डिसोसिएट हुए कोठी डिसोसिएट हो दैट इज अल्वेओली रे. तो पचारची कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट हम जानि छे सपोज दिस इज द टिश्यू एंड टिश्यू रे कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन सो एसोसिएट हो HbCO2 that is called as carbaminohemoglobin. Carbaminohemoglobin कहा कहा जाए when the hemoglobin bind with carbon dioxide. Carboxy hemoglobin कहा कहा जाए when the hemoglobin bind with the carbon monoxide. तो डिसोसिएट कोठे हो अल्वेओली रे. तो निहात ऊपर क्वेश्चन पचारछि अल्वेओली रे. अल्वेओली रे हम जानि छे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, H प्लस इज लो. ताले कोन होबो हाई PO2 लो PCO2. आंसर इज डी. यस, परफेक्ट. सेम कथा अल्वेओली रे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रो बाइंडिंग हबो, टिश्यू रे डिसोसिएट हबो एंड टिश्यू रे कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन बाइंडिंग हबो, अल्वेओली रे डिसोसिएट हबो. दिस इज द कथा. एई कथा बाकी खाली मन रखियार अछि कोठी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कोन, कोठी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कोन, कोठी H प्लस कोठी, टेम्परेचर कोठी हबो. चलो नेक्स्ट. The enzyme essential for the transport of carbon dioxide as bicarbonate. गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचारे मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर इन द ब्लड बाय को फॉर्म रे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म रे ना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म रे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ना दैट इज बाइकार्बोनेट फॉर्म रे. ताले आंसर कोन होबो दैट इज मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट फॉर्म रे मूवमेंट करे. देखो कोन ना सपोज एटा होजी टिश्यू, सपोज छोटो गोटे जस्ट 2 मिनिट रो पाठ. सपोज एटा टिश्यू एंड टिश्यू जदी 100% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कला केमती रिलीज करिवो हम जानि छे C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रो ग्लूकोज रो ब्रेकडाउन है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एटीपी. तो जो धर 100% कार्बन डाइऑक्साइड एभी टिश्यू रिलीज कला तो सेथिरु 70% कार्बन डाइऑक्साइड कोन करिवो ना ब्लड रे जो आरबीसी रहिला. तो आरबीसी रे वाटर इज देयर, आरबीसी इज सेल एंड एवरी सेल रे वाटर अछि. तो निहात ऊपर वाटर सह आरबीसी रो सपोज एटा आरबीसी एंड आरबीसी रो वाटर सह रिएक्शन करी फॉर्मेशन करिवो H2CO3 कार्बोनिक एसिड immediately carbonic acid by the enzyme carbonic anhydrase presence रे
ब्रेकडाउन हो जिवो बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस प्लस H प्लस ताहले पचारिछि एंजाइम पचारिछि तो निहात रूप रे कार्बनिक अनहाइड्रेस ऑप्शन इज सी ओके मते की को HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट रे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन oxidation state of carbon who can say what is the oxidation state of carbon in the bicarbonate अंकिता प्रतीक्षा शशिरेखा राज राजा महाराणा प्रज्ञा जस्मिन what is the oxidation state of carbon in the bicarbonate oxidation state लिपिका +4 yes जदि हम oxidation state बाहर करिबा हाइड्रोजन रो 1 प्लस कार्बन रो मागिच माने x ऑक्सीजन रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते -2 सो एटी तीनटा ऑक्सीजन अछि -6 टोटल कंपाउंड रे चार्ज -1 अछि माने तो माइनस तो दैट इज 1 - 6 x - 5 इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1 प्लस 5 इक्वल टू 4 तो आंसर विल बी 4 यस परफेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द करेक्ट अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेशन ने कि कोटा करेक्ट को about 90% of carbon dioxide is carried out by the hemoglobin as the carbaminohemoglobin केते परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनोहिमोग्लोबिन फॉर्म जाए 100% रु स्ट्रिक्टली हम जानि छे 20 रु 25% होची कार्बामिनोहिमोग्लोबिन फॉर्म रे जाए आ 70% होची बाइकार्बोनेट फॉर्म रे जाए आ 7% होची डिसॉल्व प्लाज्मा तो करेक्ट पचा जी एटा कंप्लीटली इनकरेक्ट क्लियर neural signal from the pneumotoxic center pumps increase the duration of inspiration भूल देखो worker in the grinding and stone breaking industry may suffer the lung fibrosis perfect cigarette smoking leads to inflammation of a bronchi कोटा that is पचारछि correct about तो नियत रूपरे C is correct देखो yes right तो देखो न्यूरल सिग्नल न्यूरोटॉक्सिक सेंटर आमे जानि छे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करिया पई बा इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को रेगुलेट करिया पई देयर इज ए सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लेंगेटा रे मेडुला ऑब्लेंगेटा दिस इज ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन तो मेडुला ऑब्लेंगेटा बा हाइंड ब्रेन रो पार्ट रे गोटे सेंटर अछि दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर दैट इज सिग्नल दबो काहा को हमर जो मसल रहला एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम ए दिटा मसल को सिग्नल दबो कि कंट्रैक्ट हवा पई बा हमें इंस्पिरेशन करिबा बट अनदर सेंटर गोटे थाए पॉन्स एरिया रे जहा को जाय न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ए न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कोन करे ना दैट इज डिक्रीज करे ड्यूरेशन को बा सिग्नल दबो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि स्टॉप द सिग्नल टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम तो स्ट्रिक्टली तो मन रखियो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जोटा कि पॉन्स एरिया रे अछि and pons that is a part of hind brain pons medulla oblongata cerebellum ये सब होचे hind brain रो पार्ट तो pons पार्ट रे गोटा अछि pneumotoxic center जे कि डिक्रीज करे इंस्पिरेशन को ठीक अछि ताले सेटा जे भूल हैला देन चलो चूज द राइट सीक्वेंस phenomena during the passage of carbon dioxide from blood to tissue a right sequence पढ़े से पढ़ो आंसर दियो absorption of carbon dioxide by the blood yes stop signal raja maharana perfect pneumotoxic center stop signal yes perfect कौन हबो absorption of carbon dioxide in the blood reaction of carbon dioxide with water forming the H2CO3 inside the RBC and then HCO3 at H plus reaction of carbon dioxide water forming the H2 inside the plasma by the conversion of H plus combination of followed by conversion of H2 reaction of carbon dioxide water forming H inside plasma by the conversion of H plus and combination of H plus right sequence pattern during the passage of combination of H plus with the heme part of HPO2 and LSO कौन आंसर इजी क्वेश्चन आराम से क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया से आंसर दियो यस फास्ट कौन हम जिते टिश्यू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करिवो फास्ट जो आम देखा टिश्यू सपोज दिस इज अ टिश्यू एंड टिश्यू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कला तो से कौन हम आग कौन ब्लड रे अब्जॉर्ब हम तो फर्स्ट वन इज अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड तो पी इज फर्स्ट देन तापर कौन हम ना बेसिकली
जो आरबीसी रे हमर जो रहिला वाटर अछि, सपोज दिस इज द आरबीसी एंड इट इज आवर ब्लड, तो आरबीसी रो वाटर सो आगे रिएक्शन करिवो H2CO2 gives rise H2CO3 then HCO3 होबो, तो रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड with water forming the H2CO3 inside the RBC and then HCO3 minus by the enzyme carbonic anhydrase, ठीक अछि। then होछि PQ, reaction of carbon dioxide with water forming plasma रे त नाही, then the combination of H plus with heme part of HbO2 to release the hemoglobin. Now that is combination of HCO3 heme part of HbO2 to release, that is C, that is combination of H plus with the heme part of the HbO2 to release the hemoglobin, but tissue site रे hemoglobin जेतବେଳେ ऑक्सीजन को बाइंडिंग करिथिबो बा अल्वेओल रो आनी के आस्थिबो, तो सेही टाइम रे बेसिकली कोन हबो ना H प्लस टा जे कि H प्लस जेतବେଳେ टिश्यू साइट रे इंक्रीज हेबो, pH टा कमिबो एंड pH कमी गेले हीमोग्लोबिन टा ऑक्सीजन को छाड़िबो। आमे जानिचे pH टा बहुत मैटर करे, pH जेतବେଳେ कमिबो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रो डिसोसिएट हबो एंड pH जेतବେଳେ कमिबो केतବେଳେ कमिबो आमे जानिचे H प्लस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH एंड टिश्यू साइट रे H प्लस रो इंक्रीज हुए एंड टिश्यू साइट रे H प्लस रो इंक्रीज हो, pH कमिबो, pH कमी गेले हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छाड़िबो, तो PQS, दिस इज द आंसर इज C, perfect। चलो, the transport of carbon dioxide by the blood is primarily depend upon, the transport of carbon dioxide by the blood is primarily depend upon solubility of carbon dioxide in blood, presence of carbonic anhydrase in RBC, ability of hemoglobin to bind to the transport of the transport of carbon dioxide in the blood is primarily depend upon, primarily depend upon को कोन हबो अंकिता, यस बढ़िया अछि, कारण आमे जानिचे मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड केते 70% जे कि बाइकार्बोनेट फॉर्म रे जीवो एंड जेहेतु बाइकार्बोनेट फॉर्म रे जीवो तो प्राइमरली कहा पर डिपेंड करिवो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऊपर, तो आंसर इज 96B, यस परफेक्टली पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। 100 पर्यंत करिवा, 100 टा तमर लास्ट क्वेश्चन रहइबो, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। contraction of internal intercostal muscle lift of the ribs and the sternum, RBC transport the oxygen only, thoracic cavity is anatomically an airtight chamber, healthy man inspire 5 milliliter as per minute, during expiration intrapleural is slightly below the surrounding, को आंसर कोन हबो 97, बढ़िया अछि। देखो contraction of internal intercostal muscle भूल, this is external intercostal muscle, RBC transport the oxygen only, भूल, that is RBC both oxygen as well as carbon dioxide, oxygen 97% को ट्रांसफर करे हेल्प करे, कार्बन डाइऑक्साइड को 20 to 25%। thoracic cavity is an anatomically airtight chamber, ठीक अछि। healthy man can inspire approximately 500 milliliter of air per minute, भूल, 500 milliliter for every times, तो मिनिट रे 12 रु 16 थर हम ब्रीदिंग करूचे, सो निहात ऊपर 12 रु 16 टाइम रे 6000 रु 8000 मिलीलीटर होबा कथा, दिस इज इनकरेक्ट। ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन द इंट्राप्लूरल प्रेशर इज स्लाइटली बिलो द सराउंडिंग, एक्सपिरेशन बेले इंट्राप्लूरल प्रेशर टा स्लाइटली अधिक हवा दरकार देन द सराउंडिंग, जहा फल कि हम एक्सप्रेशन करबा, एटा भी भूल, तो आंसर इज सी, यस आंसर जो मान कर सी, दैट इज परफेक्ट, राजा महाराणा जस्मिन परफेक्ट। देन 99, respiratory rhythm center is present in which part of the brain, respiratory rhythm center is present in which part of the brain, brain ro को part रे respiratory rhythm center present, that is medulla oblongata, perfect। medulla oblongata रो other function कोन, cardiovascular reflex and also gastric secretion, pneumatoxis center code located, that is pons area, okay ओके, तो एटा तमरो 100 नंबर क्वेश्चन, 100 101 एंड 102 एटा तमरो होमवर्क रहइबो, तो ए तीनटा तम पय होमवर्क रहिला, दैट इज 100 101 102, ये तम पय होमवर्क रहिला, दैट इज कोटा को सेंसिटिव, ऑक्सीजन ना H प्लस ना थर्मो, all of the following factors plays important role of regulatory respirators except कोटा,
ह्यूमन ब्रिंग सिग्निफिकेंट एबिलिटी तमर एटा रहिला होमवर्क रहिला आई होप दैट इज हेल्पफुल हेतिबो देन नेक्स्ट जेतोळे हम पढिबा तो नेक्स्ट चैप्टर गोटे जेतोळे स्टार्ट करिबा दैट डायरेक्टली हम आगो एनसीईआरटी रो थ्योरी पढिबा देन थ्योरी को नेकी एमसीक्यू करिबा दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज रो हम बेसिकली पढाई देले टोटली पर एमसीक्यू कले बट नेक्स्ट जेतोळे हम सेशन करिबा जदि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन कले तो नियत रूप में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन रो एनसीईआरटी रो थ्योरी कवर अप करिबा ता परे दैट इज हमें तार एमसीक्यू डिस्कशन करिबा एटा ही रहइबा हमर गोल एवरी क्लास रे जोटा को हम यूट्यूब रे लाइव करिया तार थ्योरेटिकल जिंस करिबा देन थ्योरी परे दैट इज एमसीक्यू आसीबा एगना मैक्सिमम पिला दैट इज जो मन थ्योरिकल प्रॉब्लम थिबो तो जेति के हम थ्योरी पढेबा गोटे पेज हो 2 पेज हो 3 पेज हो जेति की थ्योरी पढिया थ्योरी को नेकी तार एमसीक्यू डिस्कशन करिबा ठीक अछि बाकी आई होप कि समस्त को ठीक लगी एंड थैंक यू शुभस्मिता जस्मिन राजा महाराणा सोनालिसा शक्ति शुभस्मिता अंकिता एंड थैंक यू तुम एत समय दैट इज जॉइन कर इट्स ओके राजा महाराणा तो ठीक अच्छे चलो तो बर्तमान पे नेक्स्ट क्लास रे हमें अगेन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन रो दैट इज तार थ्योरी आको पढेबा एनसीईआरटी रो पूरा डायरेक्टली एनसीईआरटी रो थ्योरेटिकल जिंस को कवर अप करिबा देन थ्योरी परे एमसीक्यू डिस्कशन करिबा इट्स ओके परे देखि दबो दैट इज रिकॉर्डिंग टाकू हला ठीक अछि चलो सर नेक्स्ट क्लास केबे हबो आर पृष्टि नेक्स्ट क्लास मु तुम जणै देबी हमर विद्यासागर क्लासेस रो दैट इज तमे सब्सक्राइब करता नेक्स्ट क्लास रे नाजरीन ऑथर थैंक यू यस नाजरीन आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आर पृष्टि रिंकू राजा महाराणा यस नेक्स्ट क्लास दैट इज I will give you the that is notification when the next class will happen Subhankar okay thank you चलो आउ कार कोन डाउट अछि देखो मन रखिबो ई ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस रो टोटली परे गुटी जिंस तुम पढिबो ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली पढ़ो and you have to read only and only NCERT the main focus should be NCERT and ता बाहर को जम्मा जीवा दरकार नै मैक्सिमम क्वेश्चन सेतिर पचारिबो जेहेतु तमे ओईट में प्रिपरेशन हेले भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो माने कि नीट भी देबे सो दैट तमे निहात रूप रे सबोळ पय ट्राई करो एनसीईआरटी को भल से पढ़ी कि मन रखिया पय एवरी चैप्टर दैट इज तमे केमिस्ट्री रो इनऑर्गेनिक हो केमिस्ट्री रो ऑर्गेनिक हो आको पढ़िया से पूरा फास्ट डे रु ही बेसिकली फास्ट डे रु ही समय माने बेसिकली एनसीईआरटी को पढ़िया माने प्रैक्टिस करो सो दैट बेटरमेंट हबो आ कोन तुमको तो दरकार यूट्यूब पय तमर बेटरमेंट हबो दैट इज यू कैन कमेंट सो दैट हम सेही अनुसार ही क्लास को अपडेट करि चलिबा एंड मु तो भाबी छी नेक्स्ट क्लास रे हमें बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन रो थ्योरेटिकल जिंस आनिबा थ्योरी को नेकरी क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया ठीक अछि तो एते एबे हमें सारीबा क्लास को राजा पूर्वा सोनालिसा रिंकू अनुराग सस्मिता चलो गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड जय जगन्नाथ